Okay, so in today's session, we'll complete 2.1 poem, which is Animals. Okay, now this poem, बच्चा लोग, is written by Walt Whitson. ठीक है, यहाँ पे देखो इनके पोएट है वॉल्ट विटमैन, सॉरी नॉट वॉल्ट विटसन, द पोएट इज वॉल्ट विटमैन ओवर हियर। अभी हम पहले पोएट के बारे में देखते हैं, ठीक है, जिन्होंने पोएम लिखी है उनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। एनिमल्स, वॉल्ट विटमैन, ईयर 1819 to 1892, a major figure in early American poetry. In the age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. ठीक है, कि उस टाइम का पीरियड कैसा था कि उस टाइम के जो सारे पोएट थे ना, वो कैसे पोयम लिखते थे, वो सारे राइमिंग स्कीम में लिखते थे। उस टाइम वॉल्ट विटमैन थे जो जिन्होंने ये ट्रेडिशन तोड़ा। उन्होंने फ्री वर्स में पोयम लिखना स्टार्ट किया कि जिसका कोई राइम स्कीम ना हो। तो वो जो ट्रेडिशन था कि जो सारे पोएट राइम स्कीम में लिखते थे, वो वॉल्ट विटमैन ने ब्रेक किया। अभी आप ये सारी चीजें याद रख सकते हो, क्यों? बिकॉज आप जब अप्रिसिएशन लिखते हो ना, तब वो काम आता है। यू कैन राइट अबाउट द पोएट एज वेल। तो अगर टीचर को भी लगेगा कि वाह, बच्चे लोग को पोएट के बारे में भी आइडिया है, ठीक है। He wrote a non-conformist in all respect, including his social life. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, what he finds complicated and false. ओके, तो यहाँ पे क्या बताया है? द पोएट यहाँ पे जो वॉल्ट विटसन है, ही शोइंग अ कंपैरिजन। Okay, he's showing a comparison between who? Between animals and humans in this poem. Okay, फिर वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मतलब एक बेसिकली उन्हें ऐसे लगता है कि अगर वो एनिमल्स हुए होते, उनको ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ लगता है? he feels more comfortable with animal than humans. Why? Because he thinks that there, wait, I'll add few people. uh, yeah. Why? Because he has pointed in this poem the evil present inside the humans, which animals don't have, right? कि animals, if you see, they have a very, मतलब क्या है कि उनके अंदर कोई भी एक टाइप का, आप बोल सकते हो कि ये नहीं होता। दे आर नॉट सेल्फिश, एक इनोसेंस बोलते हैं ना हम, वो एनिमल्स में होता है, which humans don't have. And that is why the poet over here, Walt Whitman, he feels more comfortable. देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? he feels more at home, कि उनको एक होमली वाइब आती है जब वो एनिमल्स के साथ होते हैं, एंड वो चीज हम ह्यूमंस में नहीं देख सकते। एंड दैट इज व्हाई ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर मच मोर बेटर than human beings. ठीक है, we will start with the poem. बच्चा लोग इतना समझा? Did you understood about the poet and what the poem is all about? Yes, miss. Yes, Okay. yes, Yes, miss. miss. Okay, chalo, we'll start with the poem. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and white about their condition. They do not lie awake, it me sick, discussing their duty towards the God, duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me token of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? वॉल्ट विटमैन। सो इफ यू सी, देखो पोयम में बच्चा राइमिंग स्कीम नहीं है, तो यही जो ट्रेडिशन था ना, वो पोएट ने ब्रेक किया था कि उस टाइम पे 1819 से 1892 के पीरियड में कैसा था, सारे पोएट्स जो थे उस टाइम के, वो सारे राइमिंग स्कीम में पोयम लिखते थे। बट इफ यू सी दिस पोयम, यहाँ पे राइमिंग स्कीम नहीं है, ये पोयम कैसा है? फ्री वर्स में। नाउ वी विल स्टार्ट विद द
Poem. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. So, what the poet is over here is trying to say, see, I think I could turn and live with animals. So, the poet says that he wants to live in the world which is full of animals. Why? Because he feels that it is more like home to him. He is very comfortable in it. Further, he says that the poet finds the world of animals so placid and self-contained. कि poet यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो animals का world है वो उन्हें कैसे लगता है, placid लगता है. What do you mean by placid? Something which is very calm, which is peaceful, or you can even say not easily upset. कि अगर आप humans में देखो तो humans में कैसा होता है, कुछ भी हुआ तो they tend to become upset very quickly. कि अरे आपने मेरे साथ वैसे किया, I'm very angry, I'm very upset on you. Okay, but this is not the case with animals. No matter how you treat them, but if you see they will never get angry on you, or they will never get upset on you. So the poet over here is trying to say that I could turn and live with animals. के अगर कोई मुझे बोले कि आपको एनिमल्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, टर्न इज टू ट्रांसफॉर्म, that instead of being a human, I would love to be an animal. That is what the poet over here is trying to say. Why? Because he thinks the world of animal is very placid, just as I said, it is very peaceful, it is very calm, or something which not easily tends to be upset, and self-contained. Self-contained is self-sufficient, or you can say that one who has control on themselves. Okay, self-sufficient hai, they don't depend on animals. If you see, they are self-sufficient, they could say he they can live, but that is not the case with humans, right? They need to depend on another, या किसी ना किसी काम के लिए we tend to depend on another. But if you see the case in animals, that is not the case. They are self-sufficient, and that is why the poet says that he wants to become animal. Why? Because he doesn't want to be in this humanly world where people are someone who gets tend to upset easily, or they are not self-sufficient. I stand and look at them long and long. Why? Because उनको क्या लगता है कि जो animals है वो कैसे होता है, they are very calm and they do not have any kind of greed, greediness नहीं होती है, selfish नहीं होते हैं वो. And that is why the poet says that I would love to be an animal. कि मैं उन्हीं को देखता रहता हूँ. I stand and look at them long and long. Okay, so what the poet over here is thinking, that animals are basically better than humans. Why? Because they are very calm and they do not interfere in the matters of others. Again, the poet further says that he stands still and look at the animal for a very long time. ये 3 लाइन का मीनिंग समझा बच्चा लोग? Yes, Anyone with miss. any Yes, doubt? miss. Okay, No, miss. okay. Next, they do not sweat and white about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty towards God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Okay, now what he's saying further, see. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. मतलब क्या, what the poet over here is trying to say, that unlike humans have this tendency, right? They keep complaining. अगर कोई भी problem आया या कोई भी life में issues आए तो they keep complaining कि मेरे साथ ये ऐसे क्यों होता है. तो sweat and wine बच्चा is, wine is crying over here. Wine means crying and sweat is हर बात में रोना, गुस्सा करना. तो वही यहाँ पे बता रहे, that they do not sweat and white about their conditions, that how humans, they keep crying, they'll keep crying about, or they would keep complaining about their problems or about their difficulties, but animals, they don't do so. So वही अब यहाँ पे वो बता रहे, that they do not whine and white about their condition, that how humans, they keep crying about any small problem they have in their life. Animals, they don't do that. They do not lie awake in the dark and weep for their sins.
What do you mean by sins? Sins is basically the bad deeds which you do, but यहाँ पे it means wrongdoing. It's something which is happening wrong in their life. So that is why what he's saying, that animals are different from humans. Why? Because they don't show anger or they do not show grief if something wrong happens to them, right? They do not lie awake in the dark. मतलब क्या? That any, whenever they have problems in their life, एक minute, I'll start adding. थोड़े थोड़े बच्चे लिख हो रहे. Yeah. What is saying that they do not show anger or grief. Awake in the dark मतलब क्या? That humans को कैसे गुस्सा आया तो वो express करते हैं या बताते हैं. But something like this doesn't happen with animals. They won't express their anger or grief if anything wrong happens to them. फिर आगे वो क्या बोल रहे? They do not make me sick discussing their duty towards God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं? That they will never boast, okay? They will never express कि अगर कोई अच्छी चीज हो रही है, जैसे in humans, okay? Humans के साथ अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, so they will say that it is done in the name of God, yeah? कि God के वजह से हुआ. So they do not make me sick discussing their duty towards God. Discuss, make me sick मतलब discuss me. You know, humans have this tendency कि अगर कुछ हुआ, they'll start complaining कि yeah, it is because of God. या अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो if they're praising God, it's fine. But अगर कुछ wrong भी जा रहा है तो they'll start complaining कि हमारे साथ ही ऐसे होता है, भगवान ऐसा ही करते हैं. So while poet listens all of this thing, उसको क्या होता है, poet को disgusting feel होता है कि क्या ये humans आके मुझे complain कर रहे हैं and हमेशा बताते हैं कि ये तो कैसे हुआ है, ये तो God के वजह से हुआ है. But with animals that is not the case. They won't come and they won't come and they won't complain things. Animals कैसे, they are not able to express things, right? But they take care of you. So similarly यहाँ पे भी वही बता रहे थे, they do not make me sick discussing their duty towards God. That how humans they do कि अगर कोई भी बुरा काम हो रहा है या any wrong deeds which is happening, they keep it in the name of God कि यार इनके वजह से हुआ. But with most of the humans do that, and that is why he's trying to say that they try to show their good deeds and religiousness to others. So humans होते हैं, what do? They try to show their good deeds and religiousness to others. They do so in order to gain popularity among their fellows. और वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर कुछ अच्छा काम भी होगा तो बताते रहते, सबको एडवर्टाइज करते. तो उनको क्या करना होता है, उनको पॉपुलैरिटी चाहिए कि आजकल मुझे लोगों को पता चले कि मैंने ये सारा अचीव किया लाइफ में. दे वांट अटेंशन. बट ये जो एनिमल्स है बेचारे, वो ऐसे अटेंशन सीकर नहीं होते. वो सिर्फ किसके होते हैं? अगर उनका जो ओनर है सिर्फ उनके ही अटेंशन सीकर होते हैं. एंड दैट इज व्हाई द पोएट ओवर हियर थिंक्स दैट एनिमल्स they would never see, no one is dissatisfied, not one is demented. कि dissatisfied मतलब क्या? हमारे humans में कैसे होता है कि we are never satisfied, right? जितनी भी चीजें हमारे पास होती है हमें लगती है कि कम ही है. कोई भी ऐसा नहीं है कि ठीक है इतना है, ओके चलो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे पास उतना तो है. दे आर नेवर सेटिस्फाइड. we humans have this tendency कि जितना मिला उससे ऊपर का ही हम देखेंगे. और we are never satisfied in life. तो वही यहाँ पे पोएट बता रहे हैं that not one is dissatisfied. मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि एनिमल्स ऐसे हैं जो बेचारे हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं जो उनके पास है, जहाँ पे वो रह रहे उसमें वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं. तो यहाँ पे वो वही ह्यूमंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आप ह्यूमंस को देखो तो वो कभी भी लाइफ में satisfied नहीं होते हैं. Not one is demented with the mania of owning things, right? Demented is mad. कि mad in the sense कि एक anger, एक craziness होता है ना. The mania of owning things. Mania is craziness. कि मेरे पास अगर things है, if I have luxury things or if I am rich, so I have things, I have the right to own it. तो मैं सभी को बताती जाऊंगी कि देखो मेरे पास है, देखो मेरे पास है. But this is this is a tendency of humans कि वो ऐसा करते हैं. But if you see this with animals, they don't have things like, तो वो कोई things own करते नहीं है. And plus they don't have this craziness to show off.
पता है ह्यूमंस को दे हैव टेंडेंसी कि वो शो ऑफ करते रहते हैं कि हमारे पास ये थिंग्स है, या तो रोते रहते हैं कि हम कभी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है. बट दिस इज नॉट द थिंग्स विद animals. So that is why the poet feels that animals, they are never dissatisfied like humans. Okay, that humans, how they are never satisfied, that is not the case with animals. Further, the poet over here is trying to say that they stay happy with whatever they have. Okay, they stay happy with whatever they have, and they never run behind worldly things. यहाँ पे if you see, owning things मतलब क्या, we humans have this tendency of materialistic thing. हम materialistic thing में खुश रहते हैं, right? कि मोबाइल हो गया, कार हो गया, फ्लैट्स हो गए, सबके अलग अलग थिंग्स का विशेष होता है. बट यहाँ पे with you, with animals, that is not the thing. They are not running behind worldly material things like we humans. And that is why the poet over here is trying to say that they never try to possess things which are, something which is luxury or something which is for their comfort. So that is why he says that he is, see, not one is demented with the mania of owning things. That is why he says that none of them is mad behind owning the worldly things like we humans have. No animal is like that, right? अगर आप देखो तो कोई भी ऐसे भाग नहीं रहा है कोई मटीरियलिस्टिक थिंग के पीछे. बट हमारे ह्यूमंस में कैसा टेंडेंसी होता है, we keep running behind materialistic things or things which are of luxury items. वैसे तो समझा यहाँ पे क्यों पोएट बोलते हैं कि ह्यूमंस की लाइफ के कंपैरिजन में एनिमल्स की लाइफ उन्हें क्यों ज्यादा पसंद आती है, एंड व्हाई ही फील्स वेरी कंफर्टेबल विद एनिमल्स. इज इट क्लियर बच्चा लोग? यहाँ पे एनी डाउट अब Yes, तक? yes. No, miss, no doubt. ओके, No, चलो. ओके, हम लोग अभी आगे देखते हैं. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Okay? Not one kneels to another. Kneels मतलब क्या बच्चा? Bow down, आप झुकना जिसे बोलते हैं ना, वैसे. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Now, what over here the poet is trying to say, that he has never seen any animal who shows devotion to anyone by bowing down in front of the person, right? In humans we have this tendency कि अगर गलती किया तो भी झुकने के लिए या तो गलती मानने के लिए हम लोग बहुत लेट करते हैं. बट दैट इज नॉट द केस विद एनिमल्स. हमारा कैसे एक ईगो ईगो आ जाता है कि भाई मैंने नहीं किया तो मैं क्यों करूं. बट दैट इज नॉट द केस विद एनिमल्स. अगर उनको पता है उनसे कुछ हुआ है, दे विल quickly accept it and they would not even think to bow down. Okay, like humans, no, not one kneels to another means, bowing down or showing that that was your fault. Not to his kind that lived thousands of years ago. They never do so even for their ancestors. They do not show devotion towards God like humans do. So यहाँ पे क्या बता रहे वो सी, no one among them is respectable or important as we have in human society. चलो वो हम आगे देखते हैं. बट not to his kind that lived thousands of years ago, मतलब यहाँ पे क्या, not to his kind that lived thousands of years ago मतलब ancestors के बात आ गया ना. तो कभी कभी humans को ऐसे होता है ना कि भाई हमारे ancestors ने ये किया है, हम क्यों ना करें वैसे. बट such kind of thing is not सीनियर एनिमल. इनको वैसे कुछ नहीं होता है कि अगर कोई एंसेस्टर भी हुआ या कोई भी चीज हुआ, अगर उन्हें पता है कि यहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दे विल एक्सप्रेस दैट इट वाज आवर मिस्टेक. मे बी दे वुड बी साइलेंट या वैसा कुछ. बट इन ह्यूमंस इफ यू सी, वो एक पॉइंट आना डिफिकल्ट होता है दैट व्हेन दे क्विकली एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. सी यहाँ पे क्या है, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल मतलब क्या, टू हैप्पी और टू सेटिस्फाइड और अनहैप्पी over the whole world. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सी, that they do not show devotion. No one among them is more respectable or important as we have in our human society. In human beings, see, they bring me tokens of myself that enlist them plainly in their possession. And human beings we have, right? Okay, यहाँ पे देखो, so they, not one was respectable or unhappy over the whole earth, so they
show their relation to me and I accept them. अभी यहाँ पे क्या होता है, not one is respectable. अभी हमारे society में आप देखो, so we have this comparison, right? We have comparison between rich people or poor people, or if you see there are comparison in caste wise comparison होता है, या rich poor में comparison होता है. So that is not the case with animals, but in the animals of society that is not happening. They never do that, and that is why he feel कि not one is respectable, कि वहां पे वैसा कुछ नहीं है कि वहां पे कोई टाइप का comparison होता है, या यहाँ पे वहां पे पुअर रिच देखा जाता है, या कास्ट वाइज कंपैरिजन होता है. एंड दैट इज व्हाई ही फील्स दैट एनिमल्स की जो सोसाइटी है ना वो ज्यादा अच्छी है, और अनहैप्पी ओवर द होल हर्ट, कि वहां पे ऐसा नहीं है कि किसी को लेस इम्पोर्टेंस दिया जाता है या किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जैसे हमारे सोसाइटी में होता है, राइट? अगर कोई पुअर पर्सन होगा जिसे लोगों को लगता है वो हमसे ज्यादा दे आर नॉट यूजफुल टू अस, उनकी क्या हम मतलब वो क्या हमारे मदद आएंगे, तो उनको हम क्या करते हैं, वी गिव लेस इम्पोर्टेंस. बट दैट इज नॉट द केस विद एनिमल्स, के जो एनिमल्स का सोसाइटी है वहां पे everyone is happy among them, everyone is living a life which is helpful, though the animal won't be of any use, still they are happy amongst themselves. And that is why this poet over here feels that they are not like human beings. Human beings में क्या होता है, they will always find a problem खुद की life में, या sadness देखते रहेंगे, but they would not enjoy the happiest part. And that is why he feels that living with animals is way better, living in an animal society is way better than living in a society of humans. See, further क्या लिखा है, so they show their relations to me and I accept them. यहाँ पे अभी क्या बताया है कि यहाँ पे वही बता रहे कि एनिमल्स कैसे हमसे लॉयल होते हैं, एकदम ऑनेस्ट होते हैं. कहीं ना कहीं पे when you see you might get ditch in human beings, right? Human beings कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते हैं या आपसे झूठ बोल सकते हैं, but that is not the case with animals. Why? Because they are always loyal to you. They won't be able to speak to you, but एक जो अपनी हम बोलते हैं ना एनिमल्स एकदम वफादार होते हैं, कि जो एक अपना वफादार पना जो होता है ना, दे आर वेरी लॉयल, दे आर ऑलवेज लॉयल टू यू, दो दे वोंट बी एबल टू स्पीक टू यू, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन देयर एक्शंस. तो यहाँ पे वही आगे बता रहे सी, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, एंड दैट इज वेयर आई फील दैट animals are the most honest person in this society, and that is why he says that I want to live with him. When they show me this relationship, I accept them कि मुझे वो पसंद आता है, and इसीलिए मुझे उनके साथ रहना पसंद आता है. See, they bring me tokens of myself. They envise them plainly in their possession. कि they envise कि ये जो token of myself है मतलब क्या? See, I yeah, tokens of myself. Here what does token means? It means virtues like innocence, simplicity, contentment, etc. कि ये जो animals होते हैं ये इतने innocent होते हैं, इतने loyal होते हैं, इतनी simplicity होती है, तो ये सारे जो उनके qualities है जब वो मुझे बताते हैं, पोएट यहाँ पे बता रही, they bring me tokens of myself कि ये सारे qualities है, जैसे they are very innocent, they are very simple towards me. Contentment मतलब बच्चा satisfied with what they have. यहाँ पे सी contentment means satisfied with what they have. तो ये सारे जो tokens है उनके, जब वो मुझे बताते, when they envis is when they show me them plainly in their possession मतलब क्या, कि जब ये सारी चीजें वो मुझे बताते हैं, I wonder where they get those tokens. And मैं सोचता रहता हूँ, मैं कि ये सारे qualities इनमें कैसे आते हैं, and ये सारे qualities हमारे human beings में क्यों नहीं है. See, I wonder where they get those tokens. That I further keep thinking that where do they get this good qualities from? And हमारे humans के अंदर ये जो qualities है वो कहाँ चली गई है. You see, humans, they are no more innocent, they are no more simple, and they are never satisfied with what they have. So वो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ये सारे qualities humans में भी थी, but वो कहाँ पे चली गई है, I don't know.
Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं that did he left them or had carelessly lost them somewhere, के जो हमारे humans है क्या उनके पास ये क्वालिटी पहले से ही नहीं थी? तो इफ यू सी नहीं बच्चा, पहले के टाइम पे ह्यूमंस सच में सिंपल होते थे, एक इनोसेंट वाली लाइफ जीते थे, सबको मदद भी करते थे। तो वो यही बता रहे हैं that did he left them केयरलेसली पहले से ही, कि अभी अभी ऑन द वे आते आते कहीं पे ये सारी क्वालिटीज घूम गई है। द क्वालिटीज दैट वर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स इन द पास्ट, तो ये सारी क्वालिटीज पहले के ह्यूमंस में भी देखी जाती थी। ह्यूज टाइम अगो मतलब क्या, जो पहले के ह्यूमंस है उनमें भी ये सारी क्वालिटी दिखी जाती थी। इवन ह्यूमंस इन द पास्ट वर इनोसेंट, इवन दे वर काइंड टू अदर्स, इवन दे वर लॉयल टू अदर्स, but now all of these qualities can only be seen in animals and not in humans. And that is why says, have I negligently dropped them? मतलब क्या? He further wonders that humans gave up on these qualities and they have been passed on to their animals. Negligently dropped them मतलब क्या? कि क्या सच में humans ने ये सारी qualities drop कर ली है? Now if you see, there are very few people who you might see कि वो लोगों के तरफ kind है, लोगों की तरफ अच्छे से रहते हैं। तो वो यही बता रहे कि ये सारी qualities क्या पहले से घूम गई है, क्या अभी ह्यूमंस ने ड्रॉप कर दी है, एंड ये सिर्फ एनिमल्स में दिखी जाती है। तो वही यहाँ पे है, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्योंकि अभी अभी ह्यूमंस ने ये टेंडेंसी की है कि ये सारी क्वालिटीज उनकी लॉस्ट हो गई है, एंड इट कैन ओनली बी फाइंड इन एनिमल्स। समझा बच्चा पोयम पूरा? Yes, miss. Yes, miss. ओके, सो व्हाट वी Yes, हैव miss. Okay, Bacha. So what we have seen so far in this poem, the poem is about animals. यहाँ पे Walt Whitman जो है, what he is trying to say, he wants to live in the he wants to live in the world which is full of animals. Why? Because he feels that animals are way better than human beings, right? He further says that we find animals who are more peaceful. They are never complaining about things in their life. They are not running away behind worldly or materialistic things. They are very calm. They do not have any kind of greed or any kind of any kind of a show off that, yeah, I have achieved things in my life. So that is why he feels that animals ka life kaisa hai, it is way better than humans. But the session will get over in like half minute. So kindly rejoin up. फिर हम लोग एक बार summary देख लेते हैं. Yes. Yeah.